Hello everyone, very good morning. I hope you all are doing good and well. So today in the class we are going to discuss or we will be solving questions from electromagnetic induction. So just like all the lectures before, we will be practicing questions. So let's start with the very first question. Okay? Which came, I have started from the recent question to the question that came, so many years back. So that way we will traverse through the topic. So let's start with this question. Maybe you all must have seen this question. You all must have tried to do this question. Let's do it again and let's discuss the solution. Okay? Take your time, do it, let me know. If you have done it, then we can directly discuss. If not, then take time, read it, and try solving it. Here is the question, and here is this graph thing. Okay, so first read the question, then I will take you to that page. हेलो मैम केम छो मैम माइक ऑफ है। ओके, या अच्छी हूँ, काफी अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? ये सवाल नहीं करते मैम। रिजल्ट के बाद वो ये सवाल का जवाब रिजल्ट के बाद आएगा। नहीं, ऐसे भी अच्छे होना चाहिए ना। मैम अब मैं कहते हैं झूठ बोलना प्रेफर नहीं करता हूँ आपको। वो ठीक है, बट कहते हैं ना, हैप्पीनेस को कंडीशनल नहीं बनाना है, नहीं तो फिर लाइफ कंडीशनल हो जाएगी। ऐसा है मेक क्या? इट एब्सोल्यूट। हाँ, मेक इट एब्सोल्यूट ना। कोई चीज आएगा तब खुश होगे, कोई चीज चला जाएगा तो दुखी होगे। ये बहुत मिजरेबल सिचुएशन है लाइफ का। मैम सच बता रहा हूँ। आप अगर आप के अगर पेरेंट्स होंगे ना आपको पता होगा कैसा होता है। आई ये लाइन अंडरस्टैंड। आप पेरेंट्स को ये लाइन ना पेरेंट्स को पिच करो कभी। वो भी तब जब आपका बुरा वक्त थोड़ा चल रहा हो। टेस्ट वेस्ट वाला। हम्म, करेक्ट करेक्ट। मैंने भी बस फिलोसफी दी है, रियल लाइफ में ये होता नहीं है। मैम एक बार बताओ फिलोसफी जो लोग देते हैं वो पहले एक चीज लिख क्यों नहीं देते कि असली जीवन में इसके होने के चांसेस बहुत कम है। नहीं, फिलोसफी का मतलब ये होता है, इट्स नॉट अबाउट इट्स हैपनिंग, इट्स अबाउट व्हाट शुड हैपन। सो वो जो वर्ब शुड लग रहा है ना, वहां तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। फिलोसफी इज बेसिकली समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग इन द लास्ट, अल्टीमेटली। सो वो आइडियल वे ऑफ लाइफ है, जहां तक पहुंचने की कोशिश करना है। हम ठीक है, लेट फिजिक्स में एक चीज कहते हैं कि आइडल थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट। या दे हैव वेरी लेस चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस। देख लो मैम आप। यस, दैट्स करेक्ट।
Okay, so these are the options basically. If you have understood questions completely, then these are the options. So basically you have to plot EMF versus X का graph. ठीक है? So this is this. Okay, let's discuss the question. Question ये कह रहा है, there is a region in the form of an equilateral triangle of height L has a uniform magnetic field B pointing in the plus Z direction. So basically it is this region. ठीक है? So we have a region like this, and in this region there exists a magnetic field. Its dimensions are given, its height is L. ठीक है? And just here, starting from here, there is another identical triangle, I guess, a conducting loop PQR in the form of an equilateral triangle, yes, of the same height L. So identical, they are identical geometrically. And now what is happening with this identical thing? It is moving downward with certain velocity. So that is given V. And it is said that the loop starts entering the region of magnetic field with a uniform velocity. So it starts entering this region with uniform velocity V. यानी कि v क्या होने वाला है तुम्हारा v will remain constant. It's not going to change. First thing. Now the plane of loop and its orientation remain unchanged throughout. I mean ये जैसा है वैसे ही रहेगा. ये इस तरह से रखा हुआ है. It is not going to even shift a little. It will remain as it is. अपर ट्रायंगल की अगर आप बात करो तो इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज होगा. इट विल कीप ऑन मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड v. नो चेंज इन द ओरिएंटेशन थिंग. ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? नाउ एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट since initially this, if you talk about this loop, initially it is out of the region of magnetic field. ठीक है? The moment it will start moving with velocity v, it will enter into this region. ठीक है? At any time t, if you draw the diagram, just a little time after which it has entered the magnetic field, at that point of time, if you draw the draw the diagram, it will look something like this. It will look something like this, है ना? And it's moving down with certain velocity v. That is a constant, right? It is this case. Now, अगर आपको EMF निकालना है, what you will be doing? EMF क्या होता है? That is minus d phi by dt. Minus has to do with the Lenge's law. That is, it will talk about the direction of induced EMF. I mean, what direction of current it is going to send out because of the induced EMF. So negativity का simple मतलब direction से है. What is this d phi? This is change in flux. And flux is what? It is v dot a. ठीक है? d by dt. अगर आप यहाँ पे देखो, what is changing here? हम कहते हैं ना ईएमएफ इंड्यूस कब होता है? आइदर बी चेंजिंग, आइदर ए चेंजिंग, और एंगल बिटवीन बी एंड ए इज चेंजिंग. Angle between B and A is not going to change because orientation is not changing. I mean, if you talk about area vector of this loop, then it is perpendicular to the plane. Outward normal लेते हैं, so that is along plus z direction, and every time it is along plus z direction. Magnetic field is along plus z direction, so angle between area vector and magnetic field is 0 degree. Definitely area of the loop in which magnetic field is present, that is changing. ठीक है? So ये reason क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. Done है? Clear है? So basically when you are calculating flux, B को आप बाहर लोगे, dA by dt you will do. And for this we need to calculate value of A in terms of variable. Which variable? X, because X is going to change. Here X is taken as 0. As it will go down, X will increase. So यहाँ से अगर आप देखो तो ये कितना distance नीचे आया है? From here if we measure, then it has gone down by a distance of X. In terms of this X, if you calculate what? If you're going to calculate the area, we can easily calculate area. ये कैसा दिख रहा है? Parallelogram जैसा दिख रहा है. दिख रहा है ना? ठीक है? Such that this angle is 60 degree because this end is the one vertex of triangle 1, and this end
This end is the vertex of another triangle. ठीक है, again 60 degree 60 degree. This will become how much? 120, and this will become 120. So it is something like this. Area of parallelogram को लिखना आप ऑलरेडी जानते हो. So I have made for you diagram already. जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है. So आप अगर ध्यान से देखो, एरिया इसका क्या लिखोगे? पैरेललोग्राम का एरिया क्या लिखते हो? हाफ इंटू, आई मीन, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, 2 इंटू दैट कर दो, तो हाफ बेस इंटू हाइट मैंने किया. हाफ यहाँ लिखा. बेस क्या है इसका? इसको मैंने एक्स लिया. सो दिस इज बेस फॉर दिस ट्रायंगल. सो दिस इज एक्स. what will be the height? So if you write the height here, this is how much? Let's say this is h, so this will become x by 2. There is lot of symmetry, it will become x by 2. एंड h by x by 2 को आप क्या लिखोगे? tan 30 लिखने वाले हो. दिस एंगल, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में यू नो दिस थिंग विल डिवाइड एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो दीज आर वेरी बेसिक ज्योमेट्रीज. We should not go into that. X by 2 tan 30, right? That is why here I have written, so half base into height, 2 into this. So area you're getting this. नाउ इफ यू कैलकुलेट ईएमएफ, अगर आप ईएमएफ निकालते हो, आप क्या लिखोगे? यू विल बी राइटिंग, प्लस साइन को माइनस साइन को भूल जाते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं. ठीक है, सो बी डी ए बाई डी टी. सो इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, यू विल गेट बी डी ए. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे बाई डी टी, सो यू विल गेट 2bxv EMF. So EMF is what? It seems like it is directly proportional to X. So it is going to be straight line which is directly proportional to X. ठीक है, so यहाँ तो directly proportional to X बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं. नाउ वी नीड टू डू फर्दर, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं. जैसे ध्यान से अगर ग्राफ को आप देखो, यहाँ पे एल पे ईएमएफ का वैल्यू समथिंग है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट दिस पॉइंट ईएमएफ इज गिवन एज 0. सो इन एवरी ग्राफ देर इज सर्टेन पॉइंट एट विच ईएमएफ इज गिवन 0. यहाँ पे, यहाँ पे. सो इफ वी आर समहाउ एबल टू कैलकुलेट ईएमएफ 0 एट सर्टेन पॉइंट, we can राइट द करेक्ट आंसर. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है. ठीक है, इट्स मोर पोर्शन ऑफ इट विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड. जब इसका पूरा एल हाइट अंदर होगा, then how you will draw the diagram? If whole L height is inside, you will draw the diagram like this. ठीक है, so at this time you will feel like maximum of I mean uh, I mean more of L height is inside, but still you cannot say maximum area is inside. Maximum area के लिए अगर ये वाला base अंदर आने लगता है ना, तो maximum area you will start getting. ठीक है, so if it moves further beyond it, what will happen? What the diagram will look like? जैसे देखो, suppose हमने एक दूसरे केस का डायग्राम बनाया जब ये बेस अंदर की तरफ आ चुका है. ठीक है, क्योंकि एक केस हमने लिया व्हेन this much portion is inside, still this is not inside. ठीक है, in that case we got EMF is equal to 2bxv. From this we cannot calculate EMF maximum कितना जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे अगर आप मैक्सिमा निकालने जाओगे, डी बाई डी एक्स करोगे, 2bv एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है. वी आर नॉट गेटिंग एक्स का वैल्यू वेयर, नॉट मैक्सिमा, सॉरी, एक्स का वैल्यू फॉर विच वी विल गेट ईएमएफ मिनिमम. ठीक है, सो we need to do second calculation where this bigger part is inside, and in this case more of the area of second loop will be inside the magnetic field. ठीक है, लेट्स सिंपली डू द ज्योमेट्री. अगर आप इस एरिया को निकालते हो, ये एरिया कितना होगा बताओ? मैंने ज्योमेट्री कर दिया यहाँ पे एक्चुअली. सो अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, यस, सॉरी, मैंने कुछ नहीं सही किया. ये ऐसा, इसको लिख लो AOBC. AOBC तुम्हारा क्या दिख रहा है? पैरेललोग्राम दिख रहा है. ठीक है, सो AOBC इज अ पैरेललोग्राम. और इस पैरेललोग्राम से अगर आपने कौन से एरिया को हटाया, देन यू विल बी गेटिंग व्हाट? एरिया इनसाइड दिस थिंग. तो विच एरिया वी नीड टू सब्सट्रैक्ट? that will be how much? I mean we need to calculate this yellow वाला region. Yeah, so इस पैरेललोग्राम से अगर ये एरिया आप घटा दो और ये एरिया घटा दो, then you will be getting the yellow region.
राइट। सो A1 मैंने निकाल लिया सिंपल ज्योमेट्री से, हाफ, 2 into ½ बेस x है, और इस ट्रायंगल का अगर आप हाइट निकालोगे, अगेन यू विल गेट सेम एज x/2√3, हियर x इज बिगर, राइट। सो दिस इज द पैरेललोग्राम का एरिया। अगर आप इसका एरिया निकालोगे ना, ये वाले स्मॉल पोर्शन का एरिया, अब आप इसको ध्यान से देखना यहाँ पे, जैसे मैंने ऐसे किया, ये ऐसा था, एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक है। यहां से हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया था। इफ यू टॉक अबाउट दिस मेजरमेंट, देन दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, x बिलो, दिस इज अ वेरिएबल x, दिस इज l हाइट, राइट। सो x माइनस l विल बिकम दिस हाइट, है ना। सो इस हाइट को मैंने क्या ले लिया, x - l, इस ट्रायंगल के हाइट को, और उस हाइट से तुम क्या निकाल सकते हो, बेस निकाल सकते हो बाय सिंपली यूजिंग द ज्योमेट्री। सिमिलरली अगर बॉटम ट्रायंगल की बात करो ना, फिर से इस डायग्राम को आप बना लो सही से, ओनली आपको ज्योमेट्री करना था इस क्वेश्चन में बेसिकली। अब देखो ऐसा, मुझे इस हाइट को निकालना है, अगेन यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस क्या है, दिस इज x in terms of variable, and if you talk about first triangle now, then this height is equal to l, so again this will become x minus l. So both these triangles are identical, ठीक है, they are having same height, इसलिए मैंने इसको सब्सट्रैक्ट किया, ao minus 2a0, you will be getting something, some values like this. Now let's calculate the emf. अगर आप यहाँ एरिया से जाओगे ना, इसको कट कर दो, 2 x square by 2√3, if I'm not wrong, then minus 2 cancel होगा, and this is how much, this is 2 x minus l का whole square, and tan 30 is √3, so √3 आप ले लो, this is area, ठीक है। बेसिकली ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा था, बिकॉज ऑफ एरिया थिंग, राइट। सो ईएमएफ निकालोगे अगर आप क्या करोगे, b इंटू डी ए बाई डी टी, बी को कांस्टेंट लिख लो, डी ए बाई डी टी आप करो, इफ यू आर गोइंग टू डू डी ए बाई डी टी, you will be getting 2x/2√3 minus this will become 4x minus l by √3, ठीक है। यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो, 2 को कैंसिल कर दो, दिस b/√3 आप कॉमन ले लो, x माइनस दिस इज 4x प्लस 4l, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच, b/√3 4l माइनस 3x। सो मुझे ये बताओ ईएमएफ जीरो कहाँ आ रहा है, वेयर इज द ईएमएफ जीरो। फर्स्ट केस के कैलकुलेशन से तो ईएमएफ जीरो मुझे x=0 पे ईएमएफ जीरो है, सो दैट इज ऑलरेडी गिवन इन योर एवरी डायग्राम, हियर ईएमएफ इज जीरो, एवरीवेयर x=0 पे जीरो है। नेक्स्ट टाइम वेयर द ईएमएफ इज बिकमिंग जीरो, if you check with the second calculation, then this EMF will be zero if 4l minus 3x is 0. That is x is equal to 4l by 3. And if you solve it, this is approximately equal to how much, 1.33 L. So let's now check with the things. इस केस में देखो जीरो कब है, let's check it. 3l/2 से पहले जीरो है, ठीक है। सो 3l/2 तुम्हारा क्या होता है, 1.5L, और जीरो हो रहा है उससे पहले, यानी कि दिस पॉइंट मे बी 1.33L, राइट। इफ यू चेक हियर, हियर इट इज बिकमिंग जीरो एट 2L, which is not true. Here it is becoming zero at L, which is again not true. Here it is becoming zero at 3l/2, not true. It will become zero at 1.1, I mean 4/3L पे जीरो होगा. So first graph looks correct. So you needed to check with what? You needed to check with EMF thing. And EMF thing को दो बार calculate करना था. First, when it is just, it is entering inside the magnetic field region, and second time when it is trying to go out of the magnetic region, है ना। जैसे अगर आप फर्स्ट में देखो तो it is entering into the magnetic field region. If you look at the second diagram, it is going out of the magnetic region, and hence in first case if the EMF is negative, in second case EMF after zero, it is what, it is positive. So after some interval, magnetic field, the initially magnetic field was increasing, sorry, not magnetic field, flux was increasing, but because area was increasing, after certain interval of time area will start decreasing, intervened by a moment where EMF will be what, zero, okay. So this was the question basically. I hope you have got it. Now let's move on to the next question. This came in 2023, and I would say कि यहाँ पे ये थोड़ा relatively ज़्यादा easy है. Previous question में maybe because of geometry, students may get confused. It's fine. But in this question, I feel like you can
do more easily with simply following the formula. तो आप लोग कर रहे हो, तो आई विल शो यू द मैच द कॉलम थिंग. सो निकालना ये है, at t equal to 0.2 second, highlight the time. So this is 0.2 second. And at 0.2 second, you have to calculate four things or three things, I would say. EMF induced, okay? Magnitude of magnetic force acting, and then you have to calculate power dissipated, okay? And finally, the magnitude of terminal velocity you have to calculate, okay? So these are the things you need to calculate. Just write the free body diagram of this MN rod at any time t. Okay? Try calculating its velocity as a function of time t. Then you will get its EMF at any time, right? Because here, what will happen? It's not moving with constant velocity because mg is acting downward, and the moment the moment Motional EMF is getting generated, current will be there. Outward force will arise, and that outward force is function of velocity. So if velocity is changing, that force will change. So it's a variable case actually. Take a bit of more time. Maybe you people are doing it.
Okay, should I help you in this question? Let me make you understand. जैसे देखो यहाँ पे हमें रॉड दिया हुआ है, ठीक है, राइट इट्स फ्री बॉडी डायग्राम एट एनी टाइम टी, ठीक है. सो लेट्स से mg will be constant all over the time. This is a constant force, right? mg. So mg is acting downward. What force will operate in the up, or will there be force in the upward sense? Let's check it with a diagram. Let's do it conceptually. So you already know, you have learned of this railroad car, right? If there is any conducting rod or something जो कि slide कर रहा है, अगर ये slide कर रहा है, यहाँ पे slide कर रहा है ना ये, it starts falling down. So let's say at any time t it has velocity v, और अगर इसकी velocity v है ना at any time t, what will happen? Motional EMF will be there. Motional EMF कब generate होता है? When velocity is perpendicular to the rod, which is the case here. And in this, and second requirement is that magnetic field is perpendicular to the plane in which rod is lying. So rod is lying in the plane of this board, and magnetic field is perpendicular to this plane outward, right? So second condition is also getting fulfilled. It means EMF will get generated, and EMF getting generated is equal to BLV. Okay. Here L and V are perpendicular to each other, right? So because of this EMF, what will happen? Current will start flowing, because this rod is resting on a railroad car, and here this system, this arrangement has certain resistance that is given in the question here. Okay. So current will flow. Now the question is, current will flow in which direction? ठीक है. So current कैसे flow करेगा? देखो, the as the rod will come down, or more down it will come, what will happen? More area it will occupy. More area having magnetic field it will occupy. So as the rod is falling down, magnetic flux is increasing. What sort of magnetic flux? Outward magnetic flux is increasing. So according to Lenge's law, what will happen? Induced current will oppose this change. So it will generate inward flux, such that increasing outward flux will get opposed. ठीक है. सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए बताओ? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जनरेट होना चाहिए इंड्यूस करंट की वजह से, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट इज करंट इज फ्लोइंग इन दिस सेंस, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड. क्लॉकवाइज कहने का मतलब करंट ऐसे फ्लो कर, ठीक है, करंट ऐसे. अब देखो रॉड में करंट कैसे है, ये है रॉड, रॉड में करंट ऐसे है. What is the force acting on a current carrying wire kept in a magnetic field? This is I L cross B. So if you take the direction of L, this is minus I cap, it is in the direction of current, ठीक है, cross magnetic field, that is your what? In K cap direction. I cross K क्या होता है? I J K. I cross K क्या लिखते हो? Minus J. And here there is one more minus sign already, so that will become plus J. So magnetic force is arising in plus J direction. If mg is in minus J direction down, जैसे इसको मैंने लिया x, इसको लिया y, तो ये हो जाएगा minus y, ये हुआ minus x. So this is in the plus J direction, minus J, sorry. So magnetic force, sorry, mg is in negative y direction, magnetic force is in plus J direction. So this is your ILP. What will be the net force acting on the rod? Since this rod is coming down, net mg is greater than ILB definitely. So अब आप लिखो, अभी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो. So what you are going to write? You will be writing mass into acceleration equal to net force. So mg minus ILB. Now what is this current? I को क्या लिखोगे? EMF induced BLV by R. This is I, right? So let's calculate the value of acceleration. Acceleration क्या लिखोगे? mg minus I की जगह क्या रखोगे? BLV by R. Then you will be getting B square L square V by R divided by M. Now put the value of all the values you put here. So if you're going to put all the values, M का value क्या है तुम्हारा? M का value is 20 gram. So 20 by 1000 you will write everything to the SI unit. And this is your 10 minus B ka square. B is 4, right? So that is 16. L ka square. L is how much? L is 25 centimeter. That is 1 by 4 meter. So this is 1 by 16. And this is velocity V, which is a variable. This divided by R, so R is a 10, so R divided by mass, that is 20 by 1000. So if you write here acceleration, acceleration कितना आ रहा है बताओ?
This is this will get cancelled. So this is basically 2 by 10 minus v by 10. So this is 2 by 10 minus v by 10 divided by 20 by 1000. What will be the thing? आप डिवाइड कर दो 1000 by 20 से सारे टर्म्स को. सो 1000 by 20 into 2 by 10 minus 1000 by 20 into v by 10. If you want to write this, what you are going to get? This will become 10 and this is going to become how much? 5. So 10 minus 5b. ठीक है. This is acceleration. Now acceleration can be written as what? This can be written as dv by dt. So dv by dt is 10 minus 5b. Now you solve it. ठीक है. Velocity निकालो as a function of time t. So dv by क्या लिखोगे बताओ? dv by 10 minus 5b. So यहाँ से लिखो 10 minus 5b is equal to dt. ठीक है. कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, सारी चीजें सही लिखी है ना मैंने. सो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे यू विल बी गेटिंग ln minus ln 10 minus okay, here it is 5v. So what will come outside? 5 will come outside, I guess. है ना? What do you say? 5 should come outside. 10 minus 5v को आप कुछ भी y मान लो. So minus 5 dv is equal to dy. So dv is equal to dy by minus 5. So 1 by 5 होगा basically. So यहाँ पे मैं लिखूंगी minus 1 by 5 ln 10 minus 5v. And here things will vary from initial velocity is 0, finally v, and dt का time t. So this will become minus 5t, right? अब आप इसको सॉल्व करो, वेरिएबल्स पुट करो. ln 10 माइनस 5b. सो ln 10 माइनस 5b माइनस 0 पुट करोगे तो ln 10 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 5t. अगेन वैल्यू सिंपल है, सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना. सो ln 10 माइनस 5b बाई 10. ठीक है. सो यू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट माइनस 5t. अब देखो यहां से अगर मैं ln को इधर लेकर जाऊं, 10 by 10 will become 1 minus b by 2. This is equal to how much? E to the power minus 5t. तो इसको अब आप सॉल्व करो. v को क्या लिखोगे? 2 minus v is equal to 2e minus 5t. So v is equal to 2 minus this, that is 2 1 minus e to the power minus 5t. अब देखो अब हमें v मिल चुका है. v मिलने के बाद क्वेश्चन इज इजियर. यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स नाउ. अब पहले ऑप्शन में आप जाओ. पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है? एट t इक्वल टू 0.2t द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज bl v का वैल्यू पूछ रहा है. अब बताओ v का वैल्यू क्या है? b इंटू एल 1 होगा, है ना? b इंटू एल 1 कैसे है? देख लो यहाँ से. b का वैल्यू क्या है? ध्यान से आप चेक करो. b का वैल्यू 4t है. l क्या है? 1/4. सो b इंटू एल इज 1, दैट वी नो. सो दिस इज 1. वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? t इक्वल टू 2 सेकेंड. सो 0.2 है ना? यस. 5 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा? 1. तो 1 माइनस ई टू दावर माइनस 1. और e टू दावर माइनस 1 का वैल्यू क्या दिया है? 0.4. सो यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो 2 इंटू 1 माइनस 0.4 and 1 minus 0.4 is 0.6. 2 into 0.6 is 1.2. So this is 1.2. ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है. अगर अगर हमें ईएमएफ पता है, मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है आई एल क्रॉस बी. सो ईएमएफ वी ऑलरेडी नो 1.2. आप एक काम करो, यहाँ से करंट को निकाल दो. एक चीज करती हूँ मैं, इसको हटाती हूँ. ठीक है. क्योंकि this is just the information written, right? We can solve it here now. So let's do it. What is this asking? ILB. ILB को क्या लिखोगे आप? Magnitude of EMF induced by R. Because at the same time it is asking it. So this is I into L into B. अब आप इसको सॉल्व कर दो. E by R का वैल्यू है 1.2. L into B हमें पता है क्या है? 1 है. So both are coming same. I is I L cross B, right? I is E by R. E को मैंने क्या लिखा? सॉरी, E को लिखा 1.2 ना, R लिखना भूल गई. सो दिस इज दिस, राइट? सो आंसर इज 0.12. इसका आंसर क्या होगा? 0.12. नाउ एट T इक्वल टू 0 पावर डिसिपेटेड.
पावर को हम क्या लिखते हैं, पावर को लिखते हैं करंट इंटू इंटू वेलोसिटी। ठीक है, करंट इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर आप करंट को लिखोगे E बाई आर, दैट इज 0.12, वेलोसिटी इज 1.2, 12 into 12 क्या होता है, 144, एंड दैट विल बिकम हाउ मच, 0.144, सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम, क्योंकि 0.144 कुछ है नहीं ऐसा, सो वी कैन गो विद दिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट इज दिस टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल मैम वेलोसिटी इज द, यस, एफ इन मैम जब फोर्स बराबर हो जाएंगे तब हाँ फोर्स की फोर्स से इक्वेट बराबर, करते हैं। हाँ हाँ हाँ, जब तुम्हारा फोर्स बराबर हो जाएगा देन यू विल गेट टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी व्हेन mg इज इक्वल टू ILB, दैट विल गिव यू टर्मिनल वेलोसिटी। सो आप mg और ILB को इक्वल कर दो। ठीक है, सो कैसे इक्वेट करोगे बताओ? तुम चुपचाप लिख दो यहाँ पे, mg इज इक्वल टू ILB। आई को क्या लिखोगे, आई को लिखोगे ना, एक सेकेंड, एक काम करो, आई को क्या लिखोगे, BLV/R into LB, so this is B square L square B by R, so this is basically equal to B square L square into V by R। और हमें पता है BL क्या है, 1 है, दिस इज R इज व्हाट, 10, सो V इज 10 into mg। ठीक है, और mg का वैल्यू क्या है, 20/1000 into 10। ठीक है, सो दिस विल बिकम हाउ मच, 2/10 into 10, दैट इज टू थिंग, राइट, 2 मीटर पर सेकेंड, सो इसका आंसर क्या आने वाला है? This way we calculated all the values, right? We calculated induced EMF, magnetic force, this heat, power dissipated, terminal velocity. So question was not difficult, I would say. Question में simple है, तुम्हें ये equation लिखना था, इसके बाद you needed to calculate velocity as a function of time t. Once you have reached up to that point, things are quite easier. ठीक है, चलो, Harshita, how are you? Let's now focus on this question. यस हर्षिता, अच्छे से रहो, मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी बिंदास। मॉडर्न फिजिक्स का तुम लोग सारा फॉर्मूला देखते रहना, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला काफी यूज आएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का, सारी चीजें याद रखना, वेलोसिटी, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, रिडबर्ग कांस्टेंट जेट से कैसे चेंज करता है, प्लस मॉसले लॉ जो मैंने बताया था वो देख लेना, सारी चीजें देख लेना, ठीक है, मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, जेई मेंस में वो नहीं था तुम्हारा, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो पढ़ना था, कल के क्लास में मैं उसको थोड़ा डिस्कस कर दूंगी, ठीक है, तो वो करना है, नंबर ऑफ डिके वाला जो मैं कह रही हूँ, और वो करना बहुत आसान है, अगर तुम लोग केमिस्ट्री में सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है ना वो, कि फर्स्ट ऑर्डर है, दैट मैम इज फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर है, यस। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर आप पढ़े हो ना तो सिंपल वैसे ही जाएगा, कुछ नहीं करना फिजिक्स में फिर, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से उसको सॉल्व कर लेंगे। यस मैम, वाला क्वेश्चन जो भेजा था वो मैंने केमिस्ट्री से ही किया था, मैंने फिजिक्स तो सोचा ही नहीं था। सही किया, वो वैसे ही करना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, तो केमिस्ट्री में जैसे पढ़ा है वैसे लगा दो, सिंपल। यस मैम। हम्म, दैट्स गुड।
दो ऑप्शन सेम है। ओके, एक को लेस देन ले लो आप, प्रगति। एक काम करो, यहाँ पे लिख लो I1 लेस देन I2। ठीक है, सॉरी, आई डिडंट नोटिस। देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को भी दिमाग में रखना, ये सर्किट बनेगा तो कैसा बनेगा, बेस्ड ऑन दैट यू कैन आंसर इट इजिली। जैसे देखो, द लूप इज प्लेस्ड इन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ फिगर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंक्रीजेज विथ टाइम, सो dv by dt is greater than 0, it is increasing with time. So basically inward flux is increasing, यहाँ पे ऐसे लिखो, this inward flux what increases, this is the reason, this is the reason because of which what will happen, EMF will get induced, right? So whatever reason is generating induced EMF, that reason will get opposed by induced current direction. Okay, so basically inward flux is increasing as a reason, then inward flux should decrease because of the induced current. ठीक है, so induced current की वजह से ये decrease करना चाहिए. And how inward flux will decrease? Only by generating outward flux. ठीक है, so inward flux को decrease करना है, we will generate outward flux. इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि इस लूप में जो करंट होगा that should be in the anti-clockwise direction. That should be in which direction? It should be in your anti-clockwise direction. अब आप मुझे ये बताओ, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो करंट कैसे फ्लो करे, कैसे ड्रॉ करोगे, ये बताओ, बोलो। आई मीन लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, है ना, ऐसे जाना चाहिए। ओवरऑल लुक, देखो, अगर तुम इस सर्किट को ध्यान से देखो, ये सिंगल लूप सर्किट है, इसको आप ओपन कर दो, इस पूरे को ओपन कर दो। अगर ओपन करोगे यू विल गेट दिस, है ना। उसको अगर टेढ़ा है ना, टेढ़ा से उसको सीधा कर दो। इफ यू डू इट सीधा, इट विल लुक लाइक दिस। और दिस इज ए सिंगल लूप, राइट, इट इज नॉट डबल लूप और एनीथिंग, सिंगल लूप है ये। सिंगल लूप में तुम्हें पता है कि रेजिस्टर्स जो भी है सीरीज में होता है, बैटरी जो भी हो सारे सीरीज में होते हैं, एन इक्विवेलेंट वन वी गेट, राइट। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज सर्किट। सो यहाँ पे जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है will be one, will be acting as one, right? And that will send innate current in which direction? In anti-clockwise sense, so that magnetic field is outward. So अगर magnetic field outward है, तो सबसे पहले तो करंट का डायरेक्शन देख लो। A से B में किधर है? A to B है, and CD में D से C है, ठीक है। So I1 is in the direction AB, yes. I2 is in direction what? DC. Further, if I comment on the values I1 and I2, they will be same. Why they are going to be same? Because दिस इज अ सिंगल लूप सर्किट। आप ध्यान से देखो, यहाँ से जो भी करंट जा रहा है वो सीधा इसमें एंट्री लेगा, और वही सेम करंट कंटिन्यू होगा, राइट। सो एवरीथिंग इज इन सीरीज, करंट इज सेम। ये दोनों ही गलत होने वाला है। दिस इज रॉन्ग फ्रॉम लेंजेस लॉ, दिस इज करेक्ट फ्रॉम द लेंजेस लॉ, एंड दीज टू आर रॉन्ग फ्रॉम द सर्किट विजिबल, राइट। सिंगल लूप है, समझ पा रहे हो सभी लोग? क्लियर, क्लियर है?
यस मैम। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी तुम लोग इजीली करना, ठीक है? जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना मोशनल ईएमएफ का, अप्लाई द कॉन्सेप्ट, यू विल इजीली गेट द आंसर। सो सिंपली चेक, अगर तुम्हें पता है कि ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, डू दैट। एंड इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं, राइट दैट। These two are in this question, so let's do it. This is very basic and that is why I've included it. Okay, maybe I got one answer. प्रगति, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर डी था, डी था ना? सिंगल चॉइस था ना? सिंगल चॉइस ही करेक्ट है। इवन इफ इट इज मल्टीपल देन ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। सॉरी, सी को रॉन्ग लिखा था मैंने, डी इज करेक्ट। ठीक है, ओके। सोहेल, यस, इट लुक्स करेक्ट, वेरी गुड। Everybody come forward. ठीक है, मोशनल ईएमएफ को मैं एक बार डिस्कस करती हूँ। इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या है जो तुम्हें याद रखना है। तो देखो, मोशनल ईएमएफ का तुम फॉर्मूला सिंपल क्या लिखते हो, बीएलवी। दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर, आई मीन कंडीशन इसका ये है, सपोज कर लो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है एंड हियर देयर इज वन कंडक्टर लाइक दिस, ठीक है, ऐसा, एंड इट इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी v लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल थीटा हियर। ठीक है, सो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आप क्या लिखोगे, यू विल बी राइटिंग बी एल वी साइन थीटा। So we take component of velocity which is perpendicular to the length of the rod. ठीक है, so यहाँ पे length of rod is this, velocity perpendicular will be this, so BLV sin theta. सेकेंड केस अगर तुम देख लो, सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इस डायरेक्शन में है, एंड रॉड, देर इज अ रॉड मूविंग, देर इज अ रॉड मूविंग, आई मीन देर इज अ रॉड मूविंग लाइक दिस. Will there be any EMF induced? No. Here EMF induced will be zero because this magnetic field is in the plane of rod, and this is zero because here we are taking this rod as a linear rod. This rod has no I mean this width we are ignoring. ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है कि तुम्हारा रॉड जो है वो नेग्लिजिबल विथ का नहीं है, देन यू नीड टू लुक इनटू इट। मैंने ऐसा क्यों बोला, जैसे देखो, ध्यान से देखो, इमोशनल ईएमएफ जनरेट क्यों हो सकता, क्यों होता है, यू शुड गो टू द रीजन। सो जनरेट इसलिए होता है क्योंकि इस रॉड को आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, दिस रॉड इज अ कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टर हैज फ्री चार्जेस, सो इट हैज फ्री चार्ज इन इट। नाउ if you're sitting in a train, train is moving forward, you're also moving forward along with train because you're sitting inside train. Similarly, consider it as a train which is moving in this direction, all charges are sitting in it, so those charges are also moving in this direction. Done it? So this is seem like if free charges are moving with velocity v, and in that case charge and moving in a magnetic field, so force will act, what is q v cross b. This is from where we calculate direction of potential, which will be at positive potential, which will be at negative potential. So if you check it,
इस केस में आप चेक करो, सपोज कर लो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है. सो चार्जेस आर मूविंग, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज. सो velocity is in which direction? I cap. Magnetic field is in which direction? Minus k cap. You already know how to calculate the direction. I cross k is what? J, minus j. So I cross minus k is plus j, plus j. So in this rod, plus j wala jo, sorry, in this rod, positive charge will go towards plus j. Yani ki if you are taking this direction as x axis, this as a y axis, then definitely plus charge will be at the top end and hence negative charge at the bottom. It is like this. अगर आप ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लेते हो ना, लेट्स टॉक अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड. सो हियर इफ यू टॉक अबाउट फोर्स का डायरेक्शन आप निकाल लो, क्यू वी क्रॉस बी. अगर आप v क्रॉस b करोगे ना, वेलोसिटी इज इन आई कैप डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन विच डायरेक्शन? इज इन द प्लेन, राइट? सो माइनस जे कैप डायरेक्शन, क्रॉस माइनस जे कैप. आई क्रॉस जे क्या होता है? k. दिस इज माइनस k कैप. तो चार्ज ऑन द रॉड, not on the rod, on free charges present inside the rod is acting in minus k cap direction. यानी कि तुम्हारा रॉड कुछ ऐसा है जिसका ये विथ नेग्लिजिबल है, थिकनेस है नहीं, और फोर्स तुम्हारा जैसे देखो, आई मीन अगर फोर्स माइनस के कैप डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस के कैप डायरेक्शन में स्पेस भी होना चाहिए रॉड के अंदर, देन ओनली. अगर तुम्हारा ये क्यूबॉइड के शेप में होता, ऐसा कुछ होता, तो जो भी चार्जेस है उस पे माइनस के कैप की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सारे चार्जेस पॉजिटिव इधर एक्यूमुलेट हो जाते. लेकिन हमारे रॉड में ये वाला मिसिंग है, ये वाला मिसिंग है, ये है ही नहीं. समझ रहे हो? सो दिस इज बेसिकली अ लीनियर रॉड. width also we ignore, and similarly we ignore this thing, this thickness. Done it. And that is why we say that if magnetic field is in the plane of rod, no EMF will get induced. ठीक है. सो रॉड की अगर बात करूं, लीनियर जो भी चीजें हैं उसमें EMF कब इंड्यूस नहीं होगा? एक तो तब जब तुम्हारा वेलोसिटी पैरेलल टू द लेंथ है, एंड सेकंड when magnetic field is in the plane of that thin thing. ठीक है. नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमारे पास एक ऐसा रॉड है, ठीक है, थिन रॉड है, एंड इट इज मूविंग डाउन. ठीक है. ईएमएफ इंड्यूस को क्या लिखते हो? BLV. व्हाट इज LNV? सो L इज बेसिकली लेंथ, V इज परपेंडिकुलर, V इज वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लेंथ. यहाँ पे अगर आप इसकी बात करो तो अप टू दिस लेंथ this velocity is perpendicular. So we will consider displacement thing. कुछ ऐसा. So basically shortest distance between the two ends को देख लो, इससे velocity क्या है? Perpendicular है. Done है. So EMF induced will be B into length क्या लोगे? 2R लोगे, और V क्या लोगे? V. Here V is perpendicular to 2R. We cannot write length equal to pi r because V का component क्या करना है? Length से perpendicular. So अगर तुम सारे ही components को check करोगे ना, if you will check that velocity का component, I mean for every length if you check, if you take a component of every dl length which is perpendicular to the velocity, then you will get 2r itself. क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये ऐसा है, ठीक है. ये dl लेंथ ले लो, ये dl लेंथ, इसको वेक्टर की तरह मानो, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा इधर होगा, ठीक है. इधर वाले कंपोनेंट की वजह से कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा बिकॉज वेलोसिटी विल देन बिकम एंटी पैरेलल टू दैट. only this component you have to add. If you are adding this component length along, you will be getting this whole length 2r. ठीक है. So EMF induced is going to be what? B into 2r into V. And अगर जहां तक direction की बात है, how you will calculate the direction? Now P and Q की बात है, M and Q, which will be at higher potential. Let's talk about it. अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे रिड्यूस कर दो कि there is a rod like this and it is moving down with a velocity V. This is of 2r length. ठीक है. So velocity का डायरेक्शन किधर है? फोर्स का डायरेक्शन आप निकाल लो, Q V क्रॉस V. V किधर है? माइनस जे कैप डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इज इन विच डायरेक्शन? माइनस के कैप. ठीक है. एंड जे क्रॉस के क्या होता है बताओ? I J K, J cross K is I, right? So this will become I cap. Force on positive charge will act towards I cap. Yani ki towards this end positive charge will be there. So if you look at the point M and Q, this is your M, this is your Q. At M end there is negative charge, at Q end there is positive charge. M will be at lower potential, Q will be at higher potential. So this is going to be your answer. Q is at higher potential. Yes.
वैसे भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, यही करेक्ट है। ऐसे मैग्नीट्यूड का और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सो नो नीड टू डू। आई एक्सप्लेन जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स डू दिस। ठीक है, देखो इसमें तुम लोग कैलकुलेट करने मत जाना। ग्राफ के क्वेश्चन में हमें कभी कभी नेग्लेक्ट भी करना होता है, जस्ट सी की कौन सा बिल्कुल फिट नहीं करेगा हमारे केस के साथ। नॉट ऑलवेज गो फॉर द कैलकुलेशन इन एवरी क्वेश्चन। पहले देखना कि ऐसे ही कुछ दिख रहा है या नहीं। नहीं दिख रहा है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ में all the graphs were linear, first half negative, second half positive, so हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, we went into calculation। ठीक है, यहाँ पे you don't require, done है, so check the direction, let me know। Okay, Sohil, what do you think about D? नहीं, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। लेंजेस लॉ को यूज करो, यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर। यूज द लेंजेस लॉ। देखो मैग्नीट्यूड निकालने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री का कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। ग्राफ में भी देर इज नो मार्किंग डन, राइट, ओनली द शेप इज गिवन। सो ज्योमेट्री से मैग्नीट्यूड हमें चेक करना नहीं है, साइन पे चले मैम, जाओ फिर। हाँ, मैम ए भी तो नहीं हो सकते ना? बी क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ मुझे। मैम उसमें तो ईएमएफ डिक्रीज, वो मतलब सॉरी सॉरी हो सकता है इंक्रीज ए, हो रहा, पता। ए नहीं हो सकता, सॉरी ए नहीं हो सकता। ए तो नहीं हो सकता। बी हो सकता है, इंक्रीज हो रहा है। देखो क्लियरली दिख रहा है, ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। ये तीन डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा कॉइल है, यू आर सेंडिंग मैग्नेट, यू आर सेंडिंग मैग्नेट, राइट, यू आर सेंडिंग मैग्नेट लाइक दिस। सो व्हेन मैग्नेट इज एंटरिंग, आई मीन यहाँ पे था इनिशियली, जैसे जैसे ये पास आएगा कॉइल से, इट हैज मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस लिंक्ड विथ इटसेल्फ, and when it is coming closer to the loop, what is happening, magnetic flux through the coil is increasing. So initially flux is increasing, and when flux is increasing, minus EMF निकालोगे, minus d phi by dt, here the flux is increasing. For that increasing flux you will get EMF in certain with certain orientation, right? समझ रहे हो? And when your magnet will stay inside, it is moving inside with a constant speed, and then what will happen, it will go out, right? Or you can say when it is moving out like this, again it will come out, right? So when it is coming out, again magnetic flux will decrease. So on one face it is increasing, on another face it is decreasing. If flux is increasing in first case, EMF का डायरेक्शन कुछ और होना चाहिए। इफ इट इज इंक्रीजिंग इन अनदर केस, इट शुड बी डिफरेंट, है ना? क्योंकि फ्लक्स अगर एक बार इंक्रीज कर रहा है, ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ और होगा। फ्लक्स इफ इट इज डिक्रीजिंग फॉर आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन व्हाट विल हैपन, देन EMF का डायरेक्शन शुड बी opposite to that of initial one,
right? So for here, if you see here EMF is always positive. Here also it is always positive. Here also it is always positive, but which cannot be true, because once it is entering, when it is entering, flux is increasing through the coil. When it will start going away from the coil, flux will decrease. So once it is increasing, इसलिए मैंने डायरेक्ट कट कर दिया इन तीन को, बी ही बचता है. व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है बताओ? यस, यू ऑल एग्री? मैंने यस बोला था मैम। लेंजेस लॉ यूज करो, कट कर दो. ठीक है, साइन को देखो ना, यहाँ से क्लियर दिख रहा है. देखो ये आंखें होनी चाहिए, तुम्हें दिख रहा है तीन में पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हुआ है. दैट्स व्हाट स्ट्राइक योर माइंड. ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सॉरी, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई वुड से. This is also a PYQ. I don't remember which year. Maybe 2016 it is. But this is one good question, but again easy one if you have dealt with such circuits. Then if not, then maybe it will confuse you, but give some of your time to it, then I will explain. Okay.
ओके, लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ यू। देखो यहाँ पे मैंने दो सर्किट बनाया, तुम लोग देख सकते हो, है ना। दिस इज 1 2, मैंने अलग अलग बनाया है। व्हाई हैव डन दिस? ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, जैसे ये आर्म ए ले लो, ये बी ले लो, ठीक है। देन ये आर्म को सी ले लो और डी ले लो। ए बी के क्रॉस कोई भी अलग, कोई भी डिवाइस नहीं है, रजिस्टर, बैटरी, इंडक्टर, नथिंग। Similarly, CD के along कुछ भी नहीं है. So we can easily club these two. We can easily add these two. ठीक है? I mean, अगर तुम्हें कोई भी ऐसा सर्किट दिखे ना जहां पे ऐसा लग रहा हो कि ये दो सर्किट है कंबाइंड अलोंग द कंडक्टर्स लेंथ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए बी एक कंडक्टर लेंथ है, सी डी एक कंडक्टर लेंथ है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो इट विल लुक लाइक कि the complete circuit is a combination of two individual circuits, डन है, such that current flowing through this then combined arm, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो combined arm हो जाएगा, ठीक है। In this combined arm current will get affected by what was the current flowing in the individual arms. So let's check with the first one. अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहां से करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। लेट्स से करंट हियर फ्लोइंग एट एनी टाइम t is I1. And similarly here current will flow in this sense. Let's say at any time t, current flowing in second circuit is I2. And if you are clubbing this together along the conductor's length, we can club these two. To the long, these arms are having no resistance, no inductor, no capacitor, no battery, no, circuit elements. Okay, so we can club it. And if we are going to club it, in AB, I1 current was coming down. In CD, I2 current is going up. If you are joining this two, then how much current will go down? I1 minus I2. We can write like this. ठीक है, ये बेसिक जो की कॉन्सेप्ट है ना, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन सो दैट वी कैन डू हियर, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट सर्किट हमें पता है, I1 को हम डील कर सकते हैं। फर्स्ट सर्किट हमें पता है क्या है, एलआर सर्किट है। एंड एलआर सर्किट इनिशियली इट वाज ब्रोकन, राइट? स्विच वाज नॉट ओपन, नो, it was open, right? And then we are closing it at time t equal to 0. So basically current will start rising and its value will be V by R. That is the maximum current in the first circuit. Maximum current क्या होगा? Maximum current will be initially when inductor will act as a conductor and its resistance will be 0 and current will be V by R if its potential is V. You already know this, right? V by R, 1 minus, and current will decrease with time, E minus T by tau. Tau is what? Time constant, and time constant of LR circuit is what? L by R. So here L and R. So e to the power minus RT by L. This is your I1. Similarly, if you write I2, I2 में maximum current क्या होगा? यहाँ पे voltage is V. For maximum current, इंडक्टर को आप कंडक्टर की तरह ट्रीट करोगे, offering no resistance. Current will become V by R. Here also maximum is V by R. 1 minus e to the power minus this, here it is 2L. So it will become minus RT by 2L. ठीक है, this is this. Now what is the value of current I? अब आप I का वैल्यू लिख डालो, I is I2 minus I1. यही लिखा है ना मैंने, I1 minus I2 लिखा है, ठीक है। So I1 minus I2. Now do this thing, I1 minus I2 करो। अगर आप I1 minus I2 करोगे, V by R कैंसिल हो जाएगा। I2 का I1 minus I2 कर रहे हो, ये प्लस होगा। So e to the power, V by R को कॉमन ले लो, e to the power minus RT by 2L minus e to the power minus RT by L. This is what we are going to get. This is the value of I. Now read the question. Question क्या है? Which of the following statements is are correct? So we have to calculate maximum, I का maximum value, and we have to tell that when it is becoming maximum at t equal to tau, tau का value क्या है? So how we calculate maxima of any function as a function? Here I, yes, that we will do. So do calculate it. Let me know. I as a function of time t is given. Do di by dt equal to 0. Do this. Let me know. What is the value of time you people are getting?
चलो मैं भी करती हूँ तुम लोगों के साथ। लेट्स से किसका क्या आता है। बट आई नो तुम लोग मुझे पहले आंसर बताओ, है ना। है ना, कुछ ऐसा आ रहा है तुम लोगों का। मैम क्या आ रहा टाइम? देखो यहाँ पे मैंने निकाला है। अगर आप चेक करोगे इसके वैल्यूज को, ई टू द पावर -RT/12, इसको ई को इधर लेकर आओ, प्लस में पावर में जाएगा, ऐड होगा। तो -R/LT प्लस RT/12 कितना हो जाएगा, अगेन -RT/12। एंड दिस इज इक्वल टू हाफ, हाफ को मैं लिखती हूँ 2 to the power -1। दोनों तरफ आप ln ले लो। सो दिस विल बी ln दिस, एंड हियर ऑल्सो, आई मीन लेट्स टेक दिस इन द नेक्स्ट स्टेप। सो क्या होगा, मैं ऐसे बता दूं तो यहाँ से वैल्यू 12/R × ln2 होगा। 12/R ln2, दैट इज ऑप्शन डी। LN2 ऊपर आ रहा है मैम, पता नहीं क्यों। ln2 कैसे, जैसे देखो, न्यूमरेटर में आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आया है, -RT/12 आया ना। -RT/12 किसके बराबर आया, 2 to the power -1। आई एम सेइंग कुछ ऐसा ही है। नो मैम, गलत है। गलत है। मैम मैं बता रहा हूँ, आप लिखिए। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, मैंने सेकेंड स्टेप को, अच्छा ओके, नो मैंने गलत लिख दिया ना, ई का पावर नहीं लिखा, सॉरी। हाँ बोलो, क्या लिखूं बताओ। -RT/L -RT/L = इज इक्वल, नहीं, -RT/L, एल कैसे होगा, 12 आएगा ना। लॉग लेंगे ना मैम। नहीं, यहाँ से तुम ध्यान से देखो, मैं इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड में लिखती हूँ। e⁻ -RT/L है इस साइड, ठीक है। सो लेट्स राइट इट हियर, e⁻ -RT/L है, एंड व्हाट एल्स इज देयर, इज इक्वल टू 1/2, 1/2 e⁻−RT/12। डू द, आई मीन इधर इधर 2 लेकर जाओ, इधर 2 लेकर जाओ, इस ई को इधर लेकर आओ। सो e⁻−RT/12 डिवाइडेड बाई ई का पावर RT-RT/L, कुछ ऐसा होगा। इस हम्म ई के पावर को, आई मीन कंप्लीट ई में अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, माइनस आर टी प्लस बाई RT बाय। यस, प्लस RT/L। So if you are going to do this, 2 equal to e⁻RT/12। Now take ln both side, यहाँ भी ln अगर मैं लूँ, इधर भी ln करूँ, तो ln2 तो ln2 है। और ln का मतलब क्या होता है, log e, और e का पावर है यहाँ पे RT/12। सो दिस विल बिकम RT/12, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, फॉर्मूला ये होता है कि अगर log है, बेस a है, a का पावर x समथिंग है, तो इसका वैल्यू x होता है। So I use that thing, RT/12। So T का वैल्यू 12/R ln2। So correct option will be what? It will be D। मैम Now अपॉन में कहाँ आ रहा है? क्यों, T मैम निकालना है टी, ना। हाँ तो 2 LN2/R आ रहा है ना। हाँ वही तो आंसर दिया है ना। मैम डिनोमिनेटर में ऑप्शन में LN2 नीचे दे रखा है। नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का है मैम, स्लैश बीच में देखो लगा हुआ है। इसने इसने ऐसे लिखा है, लेट मी टेल अच्छा, यू।
फिर ठीक है, ऐसे लिखा है, वैसे तो टू एल गलती हो बाई सकती आर है। एल एन टू, ऐसे लिखा है इसमें। सो यहाँ पे 12 बाई को आर कर दिया ऐसे। ऐसे तो मैम गलती कर सकते हैं पेपर में, हाँ। ऑप्शन ही नहीं मिले। हम्म। ठीक है मैम ऐसा फिर। डन है। आई मैक्स निकाल लो। आई मैक्स के लिए टी का वैल्यू पुट कर दो आई के इक्वेशन में। यहाँ पे आई का वैल्यू पता है ना तुम्हें, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई मैक्स। अगर मैं यहाँ पे टी पुट करूँ ना, 2L/R ln 2, तो यहाँ से तो मुझे सिंपल कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा आई गेस। और यहाँ कितना मिलने वाला है, 2L/R दिस, ओके, 1/4, कुछ ऐसा दिखता है क्या? हम्म। हम्म। यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। एंड 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी कि V/4R। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ टाइम T हियर। अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वहां पे भी यही यूज होगा, एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है। So this was the concept. Let's do this question. This is one important question, I would say. I don't know. This also came around 2000 something. So let's do this question. इसको सही से read करो तुम लोग और try करो करने का। ठीक है, चलो। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है ना।
देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने फर्स्ट वन निकाल लिया ना, उसके बाद तो सिंपल ऑप्शन बी के लिए यू हैव टू गो डायग्रामेटिकली, यू हैव टू चेक कि रोटेशन होने से ईएमएफ चेंज में और फ्लक्स चेंज में कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं। दैट सिंपली यू नीड टू सी। ऑप्शन सी को अगर आप देखो तो सिंपल लेंजेस लॉ यूज करना है। एंड ऑप्शन डी की अगर तुम बात करो, अगेन लेंजेस लॉ से के क्लियर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ ऑप्शन ए ओनली, दैट आई फाउंड अ बिट इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देर आर टू वायर्स, एक है वायर, दूसरा है लूप। सो वन को मैंने वायर माना, सेकंड को मैं लूप बना रही हूँ, ठीक है। सो दिस लूप इज राइट एंगल ट्रायंगल एज यू कैन सी हियर, hypotenuse is parallel to the wire, ठीक है। And you are asked that there is a current flowing in the loop, ठीक है। And that current is not flowing through constant rate, it is changing, right, increasing at a constant rate of 10 ampere per second. So it is increasing with this rate. What does it mean? It means that whatever magnetic field will get generated because of current flowing in this wire, whatever magnetic field, I mean, there are three wires here, right? Through all these three wires, current is getting induced. Sorry, because of these three wires, magnetic field will be there, right? And if magnetic field is there, what will happen? And if magnetic field is changing flux we are getting in the surrounding. So इसके surrounding की आप बात कर लो, यहाँ पे ये है ना, इसके surrounding की आप बात करो। So ये region ले लो या फिर ये region ले लो, कोई भी region ले लो। In its surrounding, what is happening? Magnetic flux is changing. And whenever magnetic flux changes, what happens? EMF gets induced. And if there is a scope of current flow, current will flow, right? So question one में ये कह रहा है the magnitude of induced EMF in the wire. Done है? Because of current flowing, changing current flowing through the loop, there will, current will get induced in the wire. Why? Because since its magnetic flux, whatever magnetic flux it is generating, its magnetic flux will get linked with the wire. And if it is getting linked with the wire, EMF will get generated. ठीक है। एंड EMF का वैल्यू आप क्या लिखोगे? माइनस d∅/dt। बट द क्वेश्चन इज कि फ्लक्स लिंकेज को हम इजिली कैसे लिखें? दिस इज गोइंग टू बी द टास्क, क्योंकि तुम ध्यान से सोचो, अगर मैं इस पूरे वायर की बात करूं, वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, राइट? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर बिकॉज ऑफ दिस लूप? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर बिकॉज ऑफ द लूप? है ना। जैसे अगर हमने लूप को मान लिया कि चलो ठीक है, लूप का लेंथ है कुछ इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लंबा है, L0, and its width is something very 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 small, let's say it is something dl which is a constant, right? बहुत छोटा है, but it will have some flux linkage in it. बट फ्लक्स लिंकेज को निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। हाउ वी विल कैलकुलेट दिस फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एट ईच पॉइंट and then calculate the magnetic flux? दिक्कत लग रहा है ना। तो दिक्कत लग रहा है तो तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे ऐसे ही क्वेश्चन को इजी बनाता है। जैसे एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था, अगर तुम लोगों को याद हो, तुम लोगों ने क्वेश्चन करा हो, तो देयर वाज अ स्मॉल क्यूब, ठीक है। एंड इन दिस current was flowing, I current, changing current was flowing, and then there was a very big cube, very big cube, ठीक है। and through this, in this cube it was asked what will be the value of induced current, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में भी अगर तुम ध्यान से देखो तो कितना डिफिकल्ट है ना निकालना, क्योंकि आप देखो इसके थ्रू, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बड़े स्क्वायर के थ्रू। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, डन है। बट इफ वी डू वन थिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर हेल्प ले, मैं इस क्वेश्चन से पहले तुम लोगों को समझाती हूँ। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस से हम एक काम कर सकते हैं। लेट्स से इन द बिगर लूप देयर इज करंट फ्लोइंग आई, सेम करंट को हमने बिगर लूप में ले लिया, ठीक है। वॉट एवर करंट वॉज फ्लोइंग इन द स्मॉलर लूप, हमने उसको कहाँ ले लिया? बिगर लूप में लिया। एंड देन वी आर सेइंग कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस स्मॉलर वन।
ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 बिकॉज ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 बिकॉज ऑफ 1। सो आइदर तुम फ्लक्स बड़े वाले की वजह से छोटे वाले में निकालो या छोटे वाले की वजह से बड़े वाले में निकालो, फ्लक्स वैल्यू यू विल बी गेटिंग सेम। क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई। इफ यू आर अज्यूमिंग और if you are allowing same current to flow through the bigger loop for the sake of calculation, flux you will be getting same because M12 is equal to M21, right? So we need to use this thing. अब देखो smaller coil के थ्रू निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि we can assume that it in the question it was given this smaller square loop is at the center of bigger, ठीक है? सो ये इसके सेंटर पे है। सो बिगर लूप की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अज्यूम कर सकते हैं वही थ्रू आउट होगा, कर सकते हैं ना, क्योंकि दिस वन इज वेरी लिटिल एंड दिस वन इज वेरी बिग। So we can assume that this very little thing is almost, its all portion is almost at the center of bigger loop. So bigger loop के center पे magnetic field निकालना is easy because of 4 wires we have to calculate magnetic field, that we can do by using formula, right? And then if we are able to calculate flux through the bigger loop, flux हमें मिल गया, EMF क्या हो जाएगा? d phi by dt. This thing we can do. Here also we need to apply that logic. अब देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमने हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि चलो आई इसके थ्रू चेंज कर रहा है, लूप के थ्रू चेंज कर रहा है। मैंने सेक ऑफ कैलकुलेशन के लिए क्या अज्यूम कर लिया कि लेट्स से इसके थ्रू करंट आई जा रहा है विच इज चेंजिंग एट द सेम रेट, ठीक है? एंड लेट्स कैलकुलेट फ्लक्स बिकॉज ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस लूप बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। वी कैन डू दिस, ठीक है? सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट दैट M12 इज इक्वल टू M21, ठीक है? यानी कि फ्लक्स तुम 1 की वजह से 2 में निकालो या 2 की वजह से 1 में निकालो, यू विल बी गेटिंग सेम वैल्यू, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। तो मैंने वायर में करंट फ्लो करवा दिया और इसके थ्रू मैं फ्लक्स निकालूंगी। अगेन इसके थ्रू भी जैसे तुम्हें पता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के थ्रू करंट आई जा रहा है, तो एट एनी डिस्टेंस d मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I by 2 pi d। दिस थिंग यू नो, राइट? दिस थिंग इज क्लियर। So let's say from here, almost it is touching the wire, almost it is said in the question. So let's say at a distance x, we are we are calculating flux through this triangular loop. So at a distance x, let's take a small strip of this triangular loop, which is of thickness how much? dx, ठीक है? सो ये क्योंकि देखो लूप के लिए भी अगर तुम लूप के थ्रू भी फ्लक्स निकाल रहे हो बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर, एट ईच हाइट मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट, है ना? सो एट ईच हाइट टेक अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू इट। सो अगर मैं इसके थ्रू फ्लक्स निकालू तो कितना निकालूंगी? बताओ क्या लिखूंगी? इट्स एरिया इज हाउ मच? इट्स एरिया विल बी इक्वल टू this thing, this length of this strip into width, that is dx. So dx into length. अब देखो लेंथ कैसे निकालेंगे? So we clearly know one thing, this is your what? This is 90 degree. मैंने बीच से डिवाइड किया है, this is 45 degree. This is 45. Let's say this thing is L. This thing is L. This is small thing. हाफ को मैं ले रही हूँ L. And this is x. L by x क्या होगा बताओ? L by x will be tan 45 and tan 45 is 1. So L by x is tan 45, यानी कि L is equal to x, ठीक है? यानी कि ये L x के बराबर है। टोटल स्ट्रिप का लेंथ क्या होगा? 2L, यानी कि this into 2x. So this is going to be the area. फ्लक्स क्या होता है? एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट x डिस्टेंस? सो दैट विल बी म्यू नॉट I by 2 pi x, ठीक है? सो दिस इज द स्मॉल फ्लक्स वी कैलकुलेटेड। टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे? x को वेरी करेंगे फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, राइट? देन द होल ट्रायंगुलर लूप विल गेट कवर्ड। यहाँ पे x क्या है तुम्हारा? 0 है, एंड हियर x इज हाउ मच? हाइट दिया है क्या? यस, 10 सेंटीमीटर। सो दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है? सो फ्लक्स का वैल्यू क्या है बताओ? फ्लक्स इज हियर, x से x कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई, इसको बाहर लिख लो, म्यू नॉट I बाई 2 पाई, सॉरी 2 पाई से 2 से ये भी कट जाएगा ना, सिर्फ पाई होगा। म्यू नॉट I बाई पाई इंटू क्या करोगे? dx, और dx इज हाउ मच? dx का इंटीग्रेशन, सॉरी dx का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? x, और x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से 0.1। सो यू गॉट द आंसर, राइट? म्यू नॉट I बाई पाई, x का वैल्यू क्या है? 0.1।
1. This is the flux. What will be the EMF induced? So that is d phi by dt. And this is equal to how much? This is equal to mu naught by pi di by dt. That is 10 into 0.1. So this is basically mu naught by pi. So this is the answer. ठीक है? हमें दिया था क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द लूप. हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया सेम करंट को अलाउ कर दिया फ्लो करने के लिए वायर में and calculated flux through the loop. We will get this, I mean, whatever flux we got, this is the same flux getting linked with the wire because of current flowing through the loop. इसलिए मैंने direct flux को integrate कर दिया. And then we will get EMF getting induced. That is mu naught by pi. So this is your correct answer. ठीक है? This one is what? Correct. Everyone understood? देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. So आई मीन पहला क्वेश्चन को ईएमआई का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर करता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस, ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे निकालते हैं एंड ऑल दिस 4 ऑप्शंस आर वेरी ब्यूटीफुल. अब चलो बी ऑप्शन पे चलते हैं. बी ऑप्शन में ये कह रहा है इफ द लूप इज रोटेटेड एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर यू आर मूविंग इट विद कांस्टेंट स्पीड एन एडिशनल ईएमएफ इतना इज इंड्यूस्ड इन द वायर. अब तुम इस वायर के अराउंड इस लूप को रोटेट कर रहे हो. मैं दूसरा डायग्राम बना के दिखाती हूँ. यहाँ पे देखो इनिशियली वायर कैसा है, ऐसा. ठीक है, ऐसा. कोई भी एक पॉइंट पे जब ये ऐसे रोटेट करके इधर गया होगा तो कुछ ऐसा. देखो ये सिमेट्रिकल में सही से बना नहीं पा रही हूँ. सेम डायमेंशन होगा ना, थिंग्स विल लुक सेम, राइट? सो इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है. सिमिलरली यू जस्ट इमेजिन दिस इज द वायर. ठीक है, यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल है, दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस. सो कोई भी टी टाइम पे अगर तुम उसको देखोगे ना तो वायर से उसका शेप ऐसा ही दिखेगा. वायर के बाद, वायर के अराउंड, ठीक है, ऐसा ही दिखने वाला है. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है. सो रोटेशन की वजह से नो इफेक्ट इज हैपनिंग बेसिकली. इफ यू सी हियर, अगर तुम यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, जिस तरह से हमने फ्लक्स निकाला अभी अभी क्वेश्चन में. सो इफ यू सी हियर एक्स विल नॉट चेंज, एक्स प्रोफाइल इज रिमेनिंग सेम, right? Flux is not going to change. So if flux is not going to change, I mean extra EMF is not going to come because of this loop getting rotated around the wire. ठीक है. अगर तुम्हारा रोटेशन कुछ ऐसा होता कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज कर रहा होता, देन वी कुड हैव डन समथिंग. अगर मैंने क्या किया था, इसमें करंट फ्लो करवाया था. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आइदर इन है और या आउट है. ठीक है, यहाँ पे देखो इन है, यहाँ पे क्या है? आउट है. सो इफ यू डायरेक्टली सी हियर, इफ यू टॉक अबाउट I mean if you talk about the flux का magnitude, if you talk about flux का magnitude, it is what? It is same, right? One sided it is cos 0 1, another sided it is cos 180 minus 1. Magnitude is same, right? So if magnitude is same, it means flux is not changing. It is same. It is not decreasing. I mean it is can you see it here? Everyone agrees or not? Let me know. If not, you can tell me. एक बार बी ऑप्शन को इमेजिन करके देखो. कांस्टेंट स्पीड से अबाउट द वायर तुम रोटेट कर रहे हो. ठीक है. So it is said that an additional EMF mu naught by pi volt is induced in the wire because of rotation. Because of rotation, it is not going to come. ठीक है. एक बार और इमेजिन कर लेना तुम लोग. Let me discuss points C and D. The induced current in the wire is in opposite direction to the current along the hypotenuse. So flux अभी अभी हमने निकाला. ठीक है. अब देखो यहाँ पे current क्या हो रहा था? Current was flowing in counter clockwise direction. So current was in the anti-clockwise direction here. Let's come back to the original case happening. So current flowing is in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction का मतलब magnetic field is outward, and outward magnetic field is what? Increasing. And if outward magnetic field is increasing, because current is increasing, right? So outward magnetic flux is increasing. So यहाँ पे तुम ऐसे लिखो कि outward magnetic flux increasing. So induced current will do what? It will try to decrease this outward flux, and for that it will generate or induce current in the wire in such a way such that in this region
in this region, in the region of loop, inward flux will generate. And this is only possible if current is flowing in this direction. है ना? कैसे? क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तभी मैग्नेटिक फील्ड इधर इन होगा, इधर आउट होगा. So basically this side it will be in for this case, and this side it will be outward. So induced current has to generate inward flux, because outward flux was the increase in outward flux was the region for induced current, right? And this region will get opposed by the induced current, and hence it will generate inward flux. So option में जाओ, induced current in the wire is in opposite direction to the current along the hypotenuse. So hypotenuse के along current कैसे था? Loop में ऐसे था ना? So it is along the hypotenuse basically in the wire. So option C is what? It is wrong. ठीक है? Now there is a repulsive force between wire and the loop. How you can answer this? देखो, इसको आंसर करने का एक तरीका तो ये है, if you people have, I mean, if you people want to go with the calculation, तो कैलकुलेशन के लिए तो सिंपल मैं ये कहूंगी कि चलो इसमें तुमने देख लिया इंड्यूस करंट ऐसा हुआ, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा था, इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा था. यू ऑलरेडी नो, यू कैन कैलकुलेट फोर्स. लेट्स कैलकुलेट फोर्स ऑन द लूप बिकॉज ऑफ वायर, करंट फ्लोइंग इन द वायर, है ना? सो लूप का कोई भी एक सेगमेंट लोगे, क्योंकि वी हैव ओनली वन फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. So it can calculate force not for a loop, for a small length we can do, for any linear length we can do. So let's do this. अगर आप इस dl लेंथ के लिए करोगे तो l का डायरेक्शन किधर है? I cap. I'm taking this direction conventionally as positive x direction, I cap. Magnetic field at this point because of current flowing in the wire is in which direction? Inward. ठीक है? क्योंकि इस पे फोर्स क्यों लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द अदर वायर, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेटिंग जनरेटेड बाय द अदर वायर, राइट? अपने ही खुद में जो करंट जनरेट, खुद का जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट वोंट अप्लाई फोर्स ऑन द लूप, राइट? क्योंकि तुमने ये थोड़ी ना पढ़ा है कि जो चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो खुद पे फोर्स लगाता है. नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? वो दूसरे पे लगाएगा. सेम थिंग विल हैपन हियर. सो डायरेक्शन आप निकालो. आई क्रॉस क्या लिखोगे? माइनस के कैप. और आई क्रॉस माइनस के कैप क्या होता है बताओ? आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे. So this will become plus j, and plus j it will be, is it like that? Let's check. I j k, I cross k, it will be minus j, and here it is minus k, so plus j. plus j का मतलब फोर्स इधर लगेगा. so फोर्स इधर लगने का मतलब तो अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, but I feel like force should be रिपल्सिव. रिपल्सिव इसलिए होगा, लेंजेज लॉ से तो मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि एक 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 में जो करंट फ्लो, इंड्यूस करंट जो है वो ओरिजिनल करंट को अपोज करेगा, राइट? सो बेसिकली ऑपोजिशन इज हैपनिंग फॉर रिपल्सिव फोर्स. लेकिन यहाँ से क्यों ऑपोजिट आ रहा है? कैन एनीवन स्पॉट द डिफरेंस? आई मीन रिपल्सिव का मतलब फोर्स दूर लगना चाहिए ना, या फिर एनीवे वी शुड नॉट हरी अप टू द कंक्लूजन. यहाँ पे फोर्स हमारा जो आ रहा है वही लिखना पड़ेगा ना. तो हमें फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है? जे डायरेक्शन में आ रहा है. मे बी यहाँ पे अगर आप फोर्स निकालोगे, माइनस जे में नहीं आ रहा, आई क्रॉस माइनस के तो माइनस जे होता है. आई क्रॉस के इज माइनस जे, राइट? नो मैम, आई क्रॉस के इज जे और No. आई क्रॉस माइनस के इज माइनस जे. नो, आई क्रॉस के विल बी माइनस जे. इस वे में जब जाते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो माइनस साइन के साथ आंसर लिखते हो. आई क्रॉस जे इज के क्रॉस आई इज जे, because you are traversing in the clockwise direction. When you traverse in anti-clockwise sense, I cross k करोगे तो माइनस जे होगा. यस, ऐसे जाते हैं. आई क्रॉस के करते हैं ना तो माइनस जे होता है. ठीक है? सो आई क्रॉस के किया मैंने, माइनस जे, माइनस माइनस प्लस हो रहा है. प्लस जे मीन्स कन्वेंशनली इट शुड बी इन द अपवर्ड सेंस, राइट? और अपवर्ड से तो ये टुवर्ड्स द वायर जा रहा है. आई मीन मैम यस. मैम हाइपोटेन्यूज को लीव करके बाकी जो दो साइड हैं उन पे फोर्स कहाँ लग रहा है?
उसको आप देख लो, वही मैं देखने जा रही थी, नेट फोर्स की अब मैं बात करने जा रही थी। हाँ, सो तो वो इन मेरे ख्याल से इनवर्स लगेगा, तो मतलब वो दोनों डोमिनेट कर देंगे हाइपोटेन्यूज वाले फोर्स। मे बी हाँ, यू आर राइट। वही वही मैं चेक करने जा रही थी, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, नहीं तो फिर मसला हो जाएगा, वो हम चेक कर लेते हैं। सो लेट्स से इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस लेकर चल रही हूँ, ठीक है। सो इस सेगमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ करंट के डायरेक्शन की, तो करंट मैं किधर ले रही हूँ, आई, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, ले सकती हूँ ना? नहीं, कन्वेंशनली चलते हैं यार, कुछ गलत नहीं करना। इसको पॉजिटिव एक्स मानते हैं, इसको नेगेटिव एक्स मानते हैं। सो करंट इज फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन, माइनस आई कैप, आई क्रॉस माइनस के। आई क्रॉस के क्या होगा, जे, माइनस जे। सो यस, माइनस जे, एंड हियर फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, यस। सो बेसिकली जो तुम्हारा अगर मैथमेटिकली भी आप जाते हो ना, इस क्वेश्चन को भी तुम लोग कर लेना, मैथमेटिकली अगर जाओगे ना उस क्वेश्चन में, तो इन सारे लुक्स में फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली इस लुक पे तुम निकालना, फोर्स ऐसे लगेगा। सो ओवरऑल क्या है ना, इसका जो डाउन फोर्स है ना, इन सब का ऐड का जो डाउन फोर्स होगा इसके अप फोर्स से ज्यादा होगा। सो ओवरऑल ये रिपेल होके नीचे की तरफ भागेगा। वैसे तुम्हें कैलकुलेट करने की वहां पे जरूरत नहीं है, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो वायर था ना, इसमें करंट था नहीं पहले से। इसमें करंट था, किस डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ। और जो ये इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट हमेशा अपोज करता है, राइट। सो अगर तुमसे पूछ रहा है अट्रैक्शन या रिपल्सन, आई विल क्लियरली से कि यहाँ पे रिपल्सन होने वाला है, ये इसको अपने से दूर भेजेगा, इट इज गोइंग टू रिपेल इट, ठीक है। सो आंसर शुड बी ए एंड डी, ठीक है। एवरीवन क्लियर? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसके बाद के सारे क्वेश्चन इजी हैं आई वुड से। सो यू पीपल विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। चलो, ओके मैम। ओके, तुम थैंक यू। लोगों के पास, वेलकम वेलकम। इसके बाद दो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन एक आया था, इसको भी देख लेना। मैंने क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड कर दिए सो दैट आफ्टर क्लास यू कैन डू सम मोर क्वेश्चंस। तुम लोग प्लीज इन चार क्वेश्चंस को ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है। चलो ठीक है, तुम लोग लंच करो और अपना सही से टेक केयर करो। बाय एवरीबॉडी।